Hello guys, in first chapter of Unit 1, we have seen Introduction to Red Hat Enterprise Linux, all about initial development of Unix and Linux. Then we have seen about Linux distribution and system administration duties. Now to perform all system administrator duties, he needs something in between from which he can operate the whole system, and that is nothing but the command line. And that's our second chapter of Unit 1. There are several shells available on RHEL. One of them is bash shell. To communicate commands to the operating system kernel, an interface is needed that sits between the kernel and the end user issuing these commands. This interface is known as the shell. मतलब जो कमांड्स टाइप करता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑन सिस्टम, वो जो स्क्रीन रहता है उसका जो ब्लैक स्क्रीन, वो जो स्क्रीन आता है, दैट इज़ नथिंग बट योर बैश शेल. लिनक्स में बहुत सारे शेल्स अवेलेबल है और उसमें से जो बहुत पॉपुलर है दैट इज़ अ बैश शेल. बैश इज़ नथिंग बट बॉर्न अगेन शेल. दिस इज़ used in most of the situations. This is because it is compatible with the Bourne shell and which is commonly found on Unix server. And this is our actually Bourne shell look like. There are various shells available, some of them as TCSH, a shell with scripting language that works like the C programming language. जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं टर्बो सी का जो स्क्रिप्टिंग लिखते हैं उसके लिए जो अपने को टर्मिनल मिलता है, दिस इज़ सेम एज दैट टर्मिनल बट दिस इज़ फॉर शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट इज ZSH, that is a shell that is compatible with bash but offers even more features. Next is SASH. This stands for standalone shell. This is minimal feature shell that runs in almost all environments. कहाँ अपना सिस्टम ज़्यादा ओवरलोड नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे ओल्ड सिस्टम रहते थे, इसीलिए वो सिस्टम पे लोड नहीं डालने के लिए SASH यूज़ किया जाता था. इन शॉर्ट, बेसिकली from the bash environment, an administrator is working with commands. Now we will look forward with the shell variables. अब ये shell variable क्या होता है? जो variable हम लोग लिनक्स C में यूज़ करते थे जहाँ पे actual value store होता था, this is same as that of C variable. Now a shell variable is a common value that is used often by the shell and commands that works from that shell and it is stored with the given name. जैसे हम लोग शेल सी में एक वेरिएबल डिफाइन करते थे और वेरिएबल का एक नाम रहता था और फिर उसका एक वैल्यू स्टोर होता था, वैसे ही शेल वेरिएबल का एक नाम दिया जाता है और उसका एक वैल्यू स्टोर करते हैं. Just for this, like this example, echo $path. अब ये क्या डिस्प्ले करेगा? We will see on actual shell script. Now, what was our example? Echo $path, where path is your shell variable. Now, what values are stored in path? Let's say user local bin, user bin, bin user local, or home shikshak bin. This is actual your directory path where you are located now, और उसका जो वैल्यू रहता है वो स्टोर रहता है पाथ वेरिएबल में. बैश शेल में बहुत सारे कीज़ यूज़ किए जाते हैं, उसमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो कुछ कीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कंट्रोल सी. कंट्रोल सी क्या करता है? अगर कोई कमांड लूप में चला गया, एग्जिस्टिंग जो रन हो रहा है, और उसको
अपने को उसमें से बाहर निकलना है. सो वी हैव टू यूज कंट्रोल C. We will see on shell script actually. Now this is ls minus l, which shows a current directory structure. Now if I want to come out of it, if I click Ctrl C, that will come on your next command line. Means to come out of it immediately from a command to next command line, we have to use Ctrl C. Next is Ctrl D. This key sequence is used to send the end of file signal to a command. मतलब अभी हम लोग एक फाइल यूज़ कर रहे हैं. सपोज अभी हम लोग एक टर्मिनल पे वर्कआउट कर रहे हैं और अपने को वो टर्मिनल ही बंद करना है. सपोज आप मोजिला फायरफॉक्स पे कर रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स काम हो गया, बंद करना है. लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम अ कमांड लाइन, यू हैव टू वर्क फ्रॉम अ कमांड लाइन शॉर्टकट्स ओनली. वहाँ पे अपने को GUI जैसा इंटरफेस नहीं मिलता. सो वी हैव टू यूज कंट्रोल D. दैट विल कम आउट ऑफ from directly from that directory. Let's see, Control D. Yeah, now we have seen we directly close down that terminal. Now we will open the new terminal, and this is now next is Control R. This is specially useful when working with longer commands. Type the first character of the command and you will immediately see the last command you used. Every time ये possible नहीं होता कि हम लोगों ने क्या command use किए थे और कब use किए थे. तो बड़े बड़े commands याद रखना इतना easy नहीं होता. So to recall those commands, we have to use shortcut as a Control R. Now I am using ls minus l, which will shows you directory structure. Now if I am using Control R, see, that is a reverse search. Now if I put l in it, that shows me the last command what I have used, ls minus l. And this is one of the shortcuts to use for search. To move further, next is Control Z. Some people use Control Z to stop a command, like Control C. Control C में अब कमांड क्लोज होता है, लेकिन Control Z में इट फोर्सफुली क्लोज किया जाता है. नेक्स्ट इज Control A. Control A keystroke brings the cursor to the beginning of the current command line, and Control B at the end of the current command line. Let's see on terminal. Suppose Control Z. I am using Control Z here. Okay, this is your desktop. Now if I am using echo $path, PATH, and if I want to come start of the command line, then if I press Control A, see the cursor is directly come down on the first place, and to move at the end of the command line we have to press Control B. So this way Control A and Control B works out. Now next is bash history. The history mechanism helps to remember the last used commands. अभी during टर्मिनल जो यूज़ करते हैं हम लोग लिनक्स पे, वहाँ पे हम लोग ह्यूज नंबर ऑफ कमांड्स यूज़ करते हैं. एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल कमांड्स. तो जब भी हम लोग को रिकॉल करना है कि हम लोगों ने 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले क्या यूज़ किया था, टू यूज़ दैट, तो लिनक्स में ऑलरेडी एक मैकेनिज्म बनाया गया है, दैट इज़ योर हिस्ट्री. उसके लिए हिस्ट्री कमांड यूज़ किया जाता है डायरेक्टली, और मैक्सिमम
1000 लास्ट यूज जो कमांड्स रहते हैं वो हिस्ट्री कमांड से अपने को देखने को मिलते हैं टर्मिनल पे. You can see an overview of these remembered commands when using the history command from the bash command line. Let's see on command line. See. Now if I type history command, this will shows me all commands whatever I used previously. There are 64 commands what I have used previously. So now if I want to access cat abc, that 26 number command, so you don't need to type whole command, you just type exclamation mark on 26 number. This will directly execute that command cat abc. Then cat abc shows the actual output of that file abc. Now if I again run exclamation mark 52 command, 52 number, so that will execute ls minus l command. So there is no need to remember command every time. Just you can go through the history command and you will found whatever command you have used previously. This is same way that I have explained you already. From this list a command can also be written using exclamation mark. Now whatever the history command जो 1000 कमांड्स रहते हैं वो एक लिनक्स के कहाँ पे सेव किए जाते हैं लिनक्स के फाइल में, तो वो फाइल को नाम है bash_history और दैट इज़ अ हिडन फाइल. सो उसके आगे हमेशा डॉट रहेगा. लिनक्स में जो भी हिडन फाइल्स फाइंड आउट होते हैं सिस्टम पे उसके आगे हमेशा डॉट रहता है. सो टू सी वॉट एवर कमांड्स वी हैव यूज्ड, हिस्ट्री कमांड से तो अपने को दिख ही जाएगा वहाँ पे, लेकिन अभी अपना 63 की कमांड्स है इसलिए वो एक ही स्क्रीन पे आ गया. इफ़ 1000 commands you want to see, so directly go to the bash history file. You will find all commands on the same file. We will check it out. Bash history file, vi. See, it's upon editor, which editor you want to use. Now I am using vi editor, so it's vi and then slash dot bash underscore history. टैब दबाने से अपने को जो भी आगे करेगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. So that bash history, see, this is your bash history file and those are the contents. Okay, you can check it out on a single click, single file. To come out of it, :q exclamation, because I don't want to save this file. If you want to save this file, you have to put it out as a wq exclamation mark. Now I am coming back to the command line. Now if I want to clear this history, there is a command called history minus c. C is for clear the history. Now if I checked it out again with the history command, this will be a whole clear history. Now moving further, performing basic file system management task. Now for every user and system administrator हमेशा काम किया जाता है फाइल्स और डायरेक्टरीज पे. टू स्टोर डेटा, टू स्टोर कमांड्स, एवरीथिंग इज़ वर्कआउट ऑन अ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स. तो फिर वो मैनेज करने के लिए सब अपने को मेंटेन तो करना पड़ेगा. तो इसके लिए देयर आर सम बेसिक कमांड्स विच आर वर्क ऑन डायरेक्टरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज डायरेक्टरी. डायरेक्टरी इज अ लोकेशन फॉर स्टोरिंग फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर. मतलब जहाँ पे एक्चुअली फाइल्स अपने स्टोर किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन डायरेक्टरी इन लिनक्स, यूनिक्स, और अपना विंडोज़ पे उसको क्या कहते हैं, फोल्डर. जो भी
हायरार्किकल फाइल सिस्टम्स यूज़ करते हैं लाइक एज इन यूनिक्स लिनक्स, उनमें ही सिर्फ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, बाकी सिस्टम में फोल्डर्स बोलते हैं उसको. नाउ वी विल सी बेसिक कमांड्स. फर्स्ट इज योर cd. cd यूज़ करते हैं टू चेंज द डायरेक्टरी फ्रॉम करंट वर्किंग डायरेक्टरी. मतलब सपोज अभी हम लोग एक डायरेक्टरी पे है एंड यू वांट टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट अनदर डायरेक्टरी, तो उसके लिए cd कमांड है. वी विल सी ऑन कमांड लाइन. नाउ आई एम ऑन सी. I will check my current directory as an with command pwd. pwd shows me the home Shikshak desktop. Now this is my current path. I am on a desktop. Now if I want to move to the another directory, let's check with ls. What is in another directory? There are directories called Shikshak. Then I will change to that directory as an cd Shikshak. See, now I will check with pwd, that is home Shikshak desktop Shikshak. Now I am on a Shikshak directory. So cd change directory current directory से change करने के लिए cd command use करते हैं. Now pwd we have already seen. The pwd command stands for print working directory. Next is mkdir. If you need to create a new directory, use mkdir, and if rmdir is used to remove directories. Those are 4 basic commands used in directories. We will check both commands mkdir and rmdir on command line. Now I am on Shikshak. See, there are, I will check with ls-l. There are 2 files and 1 directory. A test1 is a file and abc is your directory. Now I will create a new directory as mkdir mkdir test. Suppose, okay, if I make ls, now test is your new directory created. See that mkdir जो हम लोग का डायरेक्टरी का नाम दिखते हैं mkdir के बाद, that is your case sensitive. मतलब if you want to put a name with capital letters, then you have to always put the directory name and in capital only. And now rmdir, what we will delete as an test जो हम लोगों ने बनाया था पहले, वही we will delete it. Now if I check with ls-l, that directory is gone. So rmdir use करते हैं to remove that directory. Now we have deleted very easily because वो empty directory था. Okay, अगर डायरेक्टरी में कोई फाइल्स रहता तो इट इज़ नॉट इजी टास्क टू डिलीट दैट डायरेक्टरी डायरेक्टली. तो वो टाइम पे वी हैव टू यूज़ rm-fr कमांड. फोर्सफुली यू हैव टू डिलीट इट. नाउ वी विल डिलीट test1 also. Okay, now if I check ls-l, there are only one directory and one file remaining. So these are the basic commands we used to handle the directories. Now we will move to the next. Now what is a file? A file is an object on a computer that stores data, information, settings or commands that used with a computer program. फाइल जो हम लोग फाइल यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है. एक तो बेसिक डेटा रहेगा अपना कुछ भी, नहीं तो कमांड्स रहेगा. जैसे हम लोगों ने बैश हिस्ट्री का देखा था, वो भी एक फाइल ही था. बैश हिस्ट्री के फाइल में बहुत सारे कमांड स्टोर थे ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज सिस्टम जनरेटेड फाइल था. नाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन फाइल बाय VI एडिटर ऑल्सो. वी विल चेक afterwards how to create all those things. Now we will see how to handle those files with various commands. First is your ls. ls क्या करता है? It will display all files and folders in current directory.
To manage those files on server, you must first know what files are available on server. For this purpose ls command यूज किया जाता है. Let's see ls which shows whatever files available on your desktop. Now if I put ls minus l, ls minus l will show whole directory structure as well as files, जहाँ पे किसने फाइल क्रिएट किया है, कौन सा परमिशंस उसको है, रीड राइट का है या और कुछ परमिशन है, कौन से डेट पे क्रिएट किया है, क्या टाइम पे क्रिएट किया है. होल हिस्ट्री विल कम आउट बाय कमांड ls minus l. Now if you are using the wildcards in commands, say like ls slash etc, we put as an bracket abc और आगे डाल दिया स्टार. दिस कमांड विल शो abc नाम से स्टार्ट होने वाले etc में जो भी फाइल्स है वो सब शो हो जाएंगे यहाँ पे. ओके, दिस इज योर होल लिस्ट. क्या क्या दिख रहा है अपने को abc फाइल में, etc में क्या क्या है स्टार्टिंग विथ द abc. लेकिन सी दिस ऑप्शन गिव्स यू द होल लिस्टिंग ऑफ जो भी etc में abc नाम से स्टार्ट हो रहा है वो सब दिख रहा है. We want to see only a files those are starting with abc. तो उसके लिए कमांड है ls माइनस d ऑप्शन है उसके लिए, ls माइनस d स्लैश etc abc bracket star. So this will shows you only those files which are starting with abc. जो भी अदर जो भी दिख रहा है वो सब उसके abc माइनस डी ls माइनस डी ऑप्शन में हम लोगों को नहीं दिखेगा. नाउ नेक्स्ट इज जो भी सिस्टम में हिडन फाइल्स रहते हैं वो एनी डायरेक्टरी में दिखते नहीं है, सब फाइल्स दिखते नहीं है डायरेक्टरी में. सो इफ यू वांट टू सी दोज फाइल्स you have to give a command as an ls minus a which will show the whole file. Now if I put ls, it will show only abc file and shikshak directory. Now if I put ls minus a, this shows me जो भी files, sorry, ls minus a, this shows me the all files which are available in that folder. जो भी hidden files है वो भी दिख जाएगा. Now next command is rm. rm is used to remove the file. We'll see on terminal. To cleaning up the file system is the task. Okay, ये easy नहीं रहता कुछ भी डिलीट करना सिस्टम से. इट्स नॉट इजी बिकॉज वंस यू डिलीट इट तो उसको रिकवर करना इज अ मेजर टास्क. सो बिफोर डिलीटिंग एनीथिंग फ्रॉम द सिस्टम यू हैव टू थिंक ट्वाइस. टू डिलीट एनी फाइल फ्रॉम डायरेक्टरी you have to put command as rm and uska file name rm. Now we will check first whatever files are available. There are file available abc. Now I will delete the file abc, rm abc. So if I checked ls minus l, that abc file is gone. Many times it's happen कि कोई फाइल डिलीट करने नहीं देता सिस्टम अपने को. That may be a reason, anything. To delete such files we have to use option as an rm minus fr. जो भी as we have seen rm
-fr a. Okay, this will forcefully delete your file. Now all files are gone. So before deleting the file, always keep in mind जो भी ऑप्शन डालोगे, always be alert, because जो भी डिलीट करना है, if you make a silly mistake like as -fr/a, okay, if I put a gap in between slash and a, there is a huge mistake, because if I'm typing this command like this way, the situation will be a disaster, because what this command will do, it will delete whatever under slash, जो भी स्लैश के अंडर रहेगा, मीन्स योर बेसिक जो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में फर्स्ट लाइन पे आता है स्लैश, उसके नीचे जो भी स्ट्रक्चर रहेगा दैट विल डिलीट, एंड देन this also delete your file A. So before deleting or removing anything from the system, think twice and type very carefully. Then we will move further with the next command. Next command is cp. It is used to copy file from one folder to another folder. So now we are on a desktop. pwd. So if I want to copy xyz file to the Shikshak directory, I will use command cp xyz to Shikshak. So now if I would want to check the directory that xyz file gets copied just now, okay, so if now if we have a directory and with subdirectories and files, and if I want to copy that directory to the another location, then we have to use option cp -r. Now if I want to copy a Shikshak directory to another directory, because directory gets copied only with, now I am on Shikshak directory, so I have to come out first, ls-l. Now I have to copy cp -r Shikshak to /tmp. Now if I want to check tmp ls-l, then this is our Shikshak directory which is gets copied right now, May 21st. So now if again if I want to copy a hidden files, then never forget to put dot before a file name. As you know, hidden file is always mentioned by dot. So then our next command is move, mv. mv is used to move file from one folder to another. कॉपी क्या करता है, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करता है विथ कीपिंग फर्स्ट कॉपी सेफ, मतलब उसका फर्स्ट जो कॉपी रहता है वो सेफ रहता है. अभी मूव कमांड में वो पूरा फाइल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव किया जाता है. सी सपोज से देयर इज अ फाइल called zx, okay, ls-l, that is file on desktop. Now if I want to move zx file to Shikshak directory, then I have to type mv zx to Shikshak. So now if I check here that zx file is not there on desktop. Now if I check cd Shikshak ls-l, the zx file is available over here. So mv command used to move a file from one location to another folder. So mv command फाइल को रीनेम करने के लिए भी यूज किया जाता है. You can also use it to rename directories or files regardless of whether there are any files in those directories. Suppose अभी zx हम लोगों ने यहाँ से कॉपी किया था,
मूव किया था शिक्षक से. So I can again move it to go back to the previous directory with another name also. Let's do it. mv zx 2/home shikshak desktop with name called as zxcv. Okay, now if I have to check it, then I will find it out, and zxcv is file gets called zx file gets replaced with the name zxcv. So file renaming भी हो जाता है mv command से, और actually move भी हो जाता है. So now moving further, अभी हम लोगों ने देखे बेसिक कमांड्स. सो नाउ हम लोग को देखना है कि जो भी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स कैसे व्यू किए जाते हैं. सो देयर फर्स्ट ऑप्शन इज cat. Cat command is used to display the contents of file by dumping it to the screen. Okay, so जो भी contents रहेंगे तो cat command से cat और फाइल का नाम डाल दिया तो it will show you the whole जो भी content रहेंगे फाइल के वो दिखा देगा स्क्रीन पे. So we'll see. Now there are file abc. Let's see. First of all, we will enter into file with vi abc. There is content called root and everything. These are 4 lines available. Okay, I will just take it as an example. So now if I want to come out of it, now if I want to check a abc on a command line only, then cat abc. See, those 4 lines are available directly here at a command line, on command line only. So it's easy to see the file on a command line only, the contents of the file on a command line. Rather go into vi, then we will check it out whole contents. उससे अच्छा तो cat command से हम लोग command line पे उसका contents देख लेते हैं. Now नेक्स्ट कमांड है tac. tac क्या करता है, जो भी हम लोग को कमांड कैट कमांड में क्या हुआ था, स्टार्ट टू एंड से अपने को जो भी रहेगा फाइल में वो कमांड लाइन में दिख जाता था. अभी tac में उसका रिवर्स एक्शन हो जाता है, वहाँ पे लास्ट टू फर्स्ट दिखता है. ओके, नाउ वी विल चेक इट ऑन कमांड लाइन. नाउ tac abc. See, this is a reverse action. जो भी फर्स्ट लाइन था वो अभी लास्ट आ गया और लास्ट लाइन फर्स्ट आ गया. Now the next command is tell. Tell command shows only the last lines of a text file. See, we will see here. Now the last line of the abc file is your Shikshak PTS 0. That line is your last line. So if I want to check a last line, then tell abc. This shows the last 2 lines of the abc file. So if I want to see, देर इज़ अ ह्यूज, अभी सपोज हमारा एक फाइल है abc फाइल में बहुत सारा 1000 ऑफ लाइंस का डेटा रहता, एंड देन यू वांट टू चेक ऑन दिया लास्ट के 2 लाइंस में क्या है, तो फिर वहाँ पे टेल कमांड हमेशा यूज़ होता है बिकॉज इट शोज ओनली लास्ट 2 लाइंस. सो टेल का फाइल का नाम डाल दिया तो पूरा फाइल दिखने की ज़रूरी नहीं है, लास्ट के 2 लाइंस क्या आते वो सीधा वहाँ पे दिख जाता है. सो टेल फाइल नेम, वहाँ पे आपके लास्ट के लाइंस वहाँ पे दिख जाएंगे आपको. नेक्स्ट इज योर हेड. जैसे टेल दिखा जाता है वैसे ही हेड का भी है, इट डिस्प्लेस द फर्स्ट लाइंस ऑफ द टेक्स्ट फाइल सेम वे. सो नाउ इफ आई चेक्ड विथ हेड कमांड, head abc, this will shows me the first line. Next command है less. The last command used, this is the last command used to monitor the contents of a text file. This command will open a
प्लेन टेक्स्ट फाइल व्यूअर, और वहाँ पे फिर ऑप्शन यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन और देख सकते हैं. सो if I want to check it out, now we will see that ABC file. Less ABC. This shows the file I have entered into a file directly, and now I am watching this file, and if I want to see if this is a small file, so I don't think so this you can understand here. If the file had a n number of lines, then that's easy to understand. So पेज अप एंड पेज डाउन कीज यूज़ करके और स्पेस बार यूज़ करके हम लोग देख सकते हैं. लेट्स सी this is the end of line and then this is the first line. So this way it's work out, and to come out of it we have to press Q. So now I've come back to the command line. Now next is more. More is also similar to the less command, but that is not so advanced. उसमें बहुत सारे कम ऑप्शन है, so mostly तो less command ही यूज़ किया जाता है. Now next is a touch command. touch command यूज़ करते हैं जब भी empty फाइल क्रिएट करना हो. अभी डेस्कटॉप पे कौन कौन सा फाइल्स है, we'll check it out with ls-l. So these are the files available, A, B, C. Okay, now if I want to check create a blank file, I will create, suppose, Shikshak as a file. So now if I will ls-n, this is Shikshak as a file, as a 0 byte file. So it's a blank file. अभी blank file की use क्यों होती है? It's often useful to create a files on file system. This is useful to test, to check, to see whether a file system is writable or not. अभी कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल सिस्टम में हम लोग कुछ नया फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. सो वो परमिशंस है कि नहीं, वो कर सकते हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए जस्ट टच करके 0 byte फाइल क्रिएट करना पड़ता है. So the touch command is used over there. Now our next is piping and redirection. Piping क्या रहता है? The goal of the piping is to execute a command and send the output of that command to the next command so that it can do something with it. मतलब जो भी कमांड एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट दूसरे कमांड को ट्रांसफ़र किया जाता है सो दैट इट कैन डू समथिंग विथ इट. लेट्स सी विद ऑन कमांड लाइन. सपोज कमांड है ps aux. दिस इज इतना बड़ा ps aux का आउटपुट है. वी कांट इवन सी द होल पेज एट वन ग्लास. सो उसको करने के लिए पाइप ps aux less. Suppose now we can see one by one, and the whole ps aux output we can see easily by this command. Now for end q, this is your output for piping. Now for redirection, redirection sends the result of a command to a file
While this file can be text file, it can also be a special file such as a device file. For example, what we have seen previously, psox का जो आउटपुट आ रहा था, psox, वो जो आउटपुट था वो लेस से हम लोग स्क्रीन पे दिखाते थे. नाउ वी कैन शो इट ऑन some store with some file. paux test dot txt file. Now if I want to check less paux test dot txt. This is your text file. This transfers your output to the text file, and that is your अब जो सिंगल रीडायरेक्टर रहता है उसकी वजह से वो फाइल प्रीवियस जो आउटपुट रहेगा उस पर ओवरराइट हो जाता है. इफ़ यू डोंट वांट टू ओवरराइट इट, देन वी हैव टू यूज अ डबल redirection sign. Let's check. Now if I make psox, now if I again do double, then paux test dot txt. This will add your content and it's not overwrite that file. If I do less paux tst dot txt, I can find that those contents twice rather than overwriting it, adding that content with it. Now next is finding files. This is very powerful command that helps you to find files based on any property. The file may have their names, the access, creation or modification date. The user who have created them, the permission is set on that file, and there will be much more than that in the file command. When you are working on the command line, however, you probably don't want to start a graphical environment just to find some files. So वो केस में find command यूज़ किया जाता है, क्योंकि every time it's not possible कि सर्वर पे graphical environment में we can be able to log in. So वो टाइम पे command line से ही find command यूज़ करते हैं. find command का syntax है find starting slash path और expression, जिसमें first is your options, then their starting slash path और last में आता है expression. Options क्या रहता है? That will be an attribute which will control the behavior and optimization method of the find process. मतलब find के जो भी actually find कैसे work करेगा, उसे क्या options रहेंगे, वो सब यहाँ पे define किया जाता है. Next is your starting slash path. This will actually define your top level directory where find begins filtering. मतलब कौन से directory में क्या find करना है वो अपने को mention करना पड़ता है यहाँ पे, so that it will be easy for system to find something. Now last is expression. This attribute controls the test that search the directory hierarchy to produce output. और जो भी फाइनल क्या फाइंड करना है वो एक्सप्रेशन में डिफाइन करना पड़ता है. सो नाउ एग्जांपल, फाइंड स्लैश माइनस नेम होस्ट और एस्ट्रिक. इसका क्या मतलब है? ये फाइंड क्या करेगा?
स्लैश के अंडर जितने भी होस्ट नाम का जो कुछ भी है वो पूरा इस पे डिस्प्ले कर देगा टर्मिनल पे. सो विल चेक इट आउट ऑन टर्मिनल डायरेक्टली. फाइंड स्लैश माइनस नेम और host star. This will be in bracket. This is our command. So this will gives you whole slash के अंदर जितना भी host hosts जो कुछ भी है slash के अंदर, this will be displayed directly on your command line. Okay, these are the file which will have all these characters in it. So this is our find command. Next is your working with an editor. अभी लिनक्स में कुछ भी करना है चेंजेस फाइल में वगैरह, तो फिर उसके लिए सम एडिटर उसका रिक्वायरमेंट रहता है. एडिटर इज़ यूजफुल whenever you want to edit some file or something. So Linux में VI editor is widely used by many users. Many Linux editors are available, but VI is the only one you should use. VI is always available no matter what Linux or Unix system you are using. VI is even available for Windows under the name of WinVI. Now VI modes. There are two modes available in VI editor. First is insert mode and another is a command mode. Then there are some shortcuts are available in VI. Whenever you want to insert commands or type a text, then you have to press I to go to the insert mode. Then A is for append the text. While typing, if you want to add some text, then we have to press A to append the text. Then small o will create a new line under the current position of the cursor, and the capital O opens a new line above the current position of the cursor. And if you want to quit from this VI editor, then you have to press escape :W Q and exclamation mark, which means W is for write and Q is for quit. Whenever you want to save any VI editor file, you have to press :W Q exclamation mark, which means you are saving that file. And if you don't want to save that file, then just Q exclamation mark, so that you can come out of it very easily. We will check on command line all these things. I suppose SSK. Now SSK is your file, and now if I want to add some text, it's come to the insert mode. Now I will type hi, how are you? When is the next class? Now to come out of it insert line mode, then O will come to the next line, and if you want to come above this line, this this is you come down to the one line above, and if you want to come down, then you have to press smaller O, that comes down to the next line. And if you want to save this file, to come out of it, :W Q and exclamation mark. Now this file is saved.
So if I want to check it again via ssk, this file is that shows this output wq, sorry, cat ssk. This shows the output on your command line. So this is all about your vi editor, and now this is your all about a second chapter from a unit 1.